Hi, welcome to lecture 4. So far what we have done is we have learned how to write if statements, we have learned how to write while, how to write for. So basically we are able to write a lot of code using all these constructs, right? So in this lecture, in lecture 4, we will be concentrating on something that will help us write better code. So whatever code we have written so far, that's absolutely great, but we are going to learn something that is going to help us write much better code than what we have been writing so far. Okay, so we'll learn something called functions. Okay, so we'll be learning something called functions. Great. So to get started, I'll start with a problem. So the problem that you want to solve right now is that we want to compute NCR, n choose r. So what exactly is this number? I hope all of you remember this. I hope you still remember from your school days. So NCR basically means n choose r. So if I have n objects, in how many ways I can choose r out of them? I want to choose r objects out of n objects. And how many ways can I do that? Right. So the basic formula for NCR is n factorial divided by r factorial multiplied with n minus r factorial. So for example, if you want to find out how many ways I have to choose 4 objects out of 10 objects, what I will do is I'll calculate 10 factorial, I will divide 10 factorial by 4 factorial and 10 minus 4 factorial as well. So this is the number that will tell me how many ways I have to choose 4 objects out of 10 items that I have. Okay, so I want to write code for that. Great, let's get started. So let me quickly create a project, lecture 4. Within lecture 4, in SRC, I'm going to create a new package, right? A subfolder within our main project folder. So let's call it, so we want to study something called functions. Let's finish it. Now within functions, let's create a new class. The class I'm going to name n choose r, NCR. Okay, I'll include main, finish. So what is the first thing that I need to do? I need to take n and r. So let's write scanner s is equals to new scanner I'll take n as, I'll take r as. So I have 2 numbers and I want to calculate NCR. So to calculate NCR, you basically need 3 components, right? You need to calculate n factorial, you need to calculate r factorial, you need to calculate n minus r factorial. So you need this, this and this. We need 3 components to calculate our final solution, right? So let's quickly write code to find out our numerator. What is our numerator? N factorial. So to calculate n factorial, I will start my numerator with 1. I'll write a for loop. What do you want to do? You want to multiply from 1 to all numbers between 1 to n. I hope all of you remember I++, which basically means I am incrementing I by 1.
right? So num is equals to, num is my numerator, I am writing a shortcode for numerator, so num is 1, and I am multiplying all numbers from 1 to n into num. So that should give me n factorial. So that's your numerator. For denominator, you have two components. So I'm going to call them denominator 1, which is r factorial. So the code is going to look exactly same. I just copy paste it below. The only thing that's going to change is, instead of this n, we need a r, and instead of multiplying into numerator, we will multiply it into denominator. Right? So now we have n factorial, we have r factorial. What do you need now? You need n minus r factorial. Again, the code is going to look exactly the same. It's just that instead of denominator 1, we'll have denominator 2, and we will go till n minus r and by the time you reach line 26, you have all three components. Right? I have all the three components that are required to get to my answer. So what will my answer? My answer will be, I need to divide my numerator by denominator 1 into denominator 2, and I can print out my answer. Okay? So let's quickly run this. So save the file. So it's asking for the first number. Let's say I have 6 objects and I want to choose 3. So it's saying there are 20 ways you can choose 3 objects out of 20. Right? Let's just make sure the calculation is correct. So if you will, so 6 choose 3. What will this be? This will be 6 factorial divided by r factorial, 6 minus 3 factorial, right? 6 factorial is 720. 3 factorial is 6. This also is 3. So again 3 factorial is 6. This becomes 36. 720 divided by 36 will be 20. That's the correct answer that we are getting. Okay? So we are getting exactly the correct answer that we were hoping to get. Great. So this works exactly the way we want it to work. But I have a small problem with this whole setup. The way we have written our code, I don't like it much. Why? So हमने यहाँ पर देख लिया कि हम n factorial कैसे निकालेंगे. हमने exactly same code नीचे copy किया to find out r factorial. Then we copied exactly the same code again to find out n minus r factorial. जो code चाहिए था उसको मैंने पहले लिखा, दिमाग लगाया पूरा, फिर मैंने उसको दोबारा कॉपी किया, फिर मैंने उसको फिर से कॉपी किया. So every place where you need to find factorial, you are copying the exact same code that you have written once. Code copy करना ना बहुत ही बुरा idea होता है. It's a really bad idea. Because now let's say I find that मेरे factorial निकालने में छोटी सी गलती थी कुछ, तो मुझे एक एक करके सब जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ मैंने कॉपी किया हुआ है. Every place where I have copied my factorial का code, I have to go to each and every place and change or correct it. जो भी गलती की हुई है उसको ठीक करना पड़ेगा मुझे. Okay? So that's a very bad practice to do. We should not copy code again and again and again. Instead, what we should do, we should use something called a function. So what is a function? A function is basically a box which takes some input and which gives you some output. That's it. It's a box which takes input, gives us output. So what we want is that the factorial code that we need will create a box like this. Let's name it factorial. And whenever we want to use factorial, first of all you want to find n factorial. Let's say I am calculating 10c4. So first of all I want 10 factorial. So I'll give it 10. And it should calculate the output accordingly and give this to me. Second time I need 4 factorial, which is r. So I'll give input as 4
and it should calculate 4 factorial and give me the answer. Third time I need to calculate 6 factorial, so I will give it 6 and it should calculate 6 factorial and give me the output as well. I'll just repeat, okay? So basically a function is a box. It's kind of a black box. You don't care what exactly is going on inside a function. A function is a box which takes some input, does some calculation, gives you the output and gives you the output, okay? So whenever I need to calculate factorial, instead of copying the code again and again and again, I'll just use this box at all those places. And it should be as simple as saying, hey, please get me factorial of 10. Next time I want to use it, I'll just say, hey, please get me factorial of 4, and so on, okay, and so on. Great. Let's see how that works in practice, okay? So what you want here is, you want that this factorial code over here should not get repeated again and again. We want to reuse it by putting it this part inside a function. So how do we make a function? How do we define our function? So to do so, we need to first of all write public static. The way we have been writing for main, we need to write that again here, okay? A function is basically, as we discussed before, a function is defined by 3 things. What kind of input it requires, what kind of output it provides, what is the name of the function. So in our case, the name can be factorial. So it requires these 3 things to fully define what a function is exactly going to do. So we need to tell it, whenever we want to create a function, we need to tell what kind of input this function is going to take, what kind of output this function is going to provide us, and what is the name of the function, okay? Whenever we will create a function, for now, we will be writing public static in front of it, just for now. As soon as we study object-oriented programming, we will understand what exactly public means, what exactly static means. The way to write a function is going to be, you write public static for now, followed by output type. What kind of output you are going to return? For example, factorial is going to give me a number, an integer. So my output for factorial is going to be integer. Then you need to tell what is the function name. So हमें नाम बताना होगा. For example, in our case, I am going to name it factorial. So we need to tell what is the function name. Then you need to tell within these brackets what is the type of your input. Let me just correct it. So we need to tell what is the input going to be like. So in our case, again, input is going to be an integer. Let's see this in practice. So as I said, I am going to write public static. Our factorial function is going to return an integer. ठीक है, नंबर लेगा, नंबर ला के दे देगा. मैं उसको 4 दूंगा तो वो मेरे को 24 ला के दे देगा. So it's going to give me an integer. Name of the function factorial. Input क्या चाहिए factorial को? एक और नंबर चाहिए. So int n. ठीक है, ये मेरा factorial का function होगा. क्या है ये factorial function? It takes a number from me, it returns a number and it's called factorial. तो मेरे को n मिल गया यहाँ पर जैसे ही मैं आया मेरे को n मिल चुका है. अब मुझे क्या करना है? n factorial कैलकुलेट करना है. सो एग्जैक्टली जैसे नीचे कर रहे थे, आंसर 1, एक से लेके n तक सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर के अंदर, and I can return answer after that. So what does return answer means?
So this function said that I am going to return an integer. My output is going to be an integer. So whatever the answer, integer answer that you get to, you need to use the return keyword to say that, hey, I want to return this number. So you are returning answer to whoever used that function for. So हमें answer return करना है. So हमने लिख दिया return answer. Okay? Great. So ये हो गया हमारा factorial का function. क्या क्या बताना पड़ा हमें? हमें बताना पड़ा इसका नाम क्या है. इसको इनपुट में एक नंबर चाहिए, ये आउटपुट में एक नंबर ला के देगा. ये जो दो चीज़ें हैं अभी के लिए हम हमेशा पब्लिक स्टैटिक यूज़ करेंगे. थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे क्या होता है पब्लिक और क्या होता है स्टैटिक. ओके, कूल. सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस एक्स्ट्रा कोड. जब मुझे न्यूमरेटर चाहिए, आई डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस. मुझे न्यूमरेटर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. किसका? n का. माई न्यूमरेटर इज फैक्टोरियल n. What is your denominator 1? It's factorial of r. What is your denominator 2? It's factorial of n minus r. So मुझे सिर्फ इतना लिखना है. पहले क्या चाहिए? n का फैक्टोरियल चाहिए. सो फैक्टोरियल लिखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी इनपुट देना है. यहाँ पर हमने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मेरे को एक नंबर इनपुट चाहिए. सो यहाँ पर मुझे अगर फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे वो नंबर देना पड़ेगा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है. सो फैक्टोरियल n, फिर मुझे फैक्टोरियल r चाहिए था, फिर मुझे फैक्टोरियल n माइनस r चाहिए था. मैंने 3 बार सेम फंक्शन यूज़ कर लिया. वो तीनों बार ऊपर जाएगा, इसको इवैल्यूएट करेगा और मुझे मेरा आंसर ला के देगा. पहली बार वो n फैक्टोरियल आएगा, दूसरी बार वो r फैक्टोरियल आएगा, तीसरी बार वो n माइनस r फैक्टोरियल आएगा. एंड आई विल गेट माई आंसर. ओके, ग्रेट. सो लेट्स क्विकली राइट कपल अदर फंक्शंस एज वेल. ठीक है, अब मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जो कि मुझे बताएगा एक नंबर प्राइम है या नहीं है. गिवन अ नंबर, चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट. कर चुके हैं हम बहुत बार. कैसे लिखेंगे फंक्शन? पब्लिक स्टैटिक तो लिखना ही है. ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? आउटपुट क्या होगा इस फंक्शन का? एक नंबर मिलेगा उसको, वो क्या निकालेगा? प्राइम है या नहीं है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. सो इट्स गोइंग टू रिटर्न अ बूलियन. फंक्शन का नाम थोड़ा ढंग से रख लेते हैं, इस प्राइम रख लेते हैं. इसको मुझसे क्या चाहिए? इसको वो नंबर चाहिए जिसके लिए चेक करना है प्राइम है या नहीं है, whether the number is prime or not. ये चेक करने के लिए बताना है. ओके, ग्रेट. सो प्राइम है या नहीं है, क्या है चेक करते थे. अब तक तो आता ही है हमें. एक डी लेते हैं, डी को 2 से शुरू करते हैं, n माइनस 1 तक जाएंगे. अगर किसी से भी डिवाइड हो गया n तो प्राइम नहीं है, वरना प्राइम है. ओके, सो लेट्स टेक अ डी, स्टार्ट फ्रॉम 2. आई एम यूजिंग अ वाइल, बस ऐसे ही. There is no particular reason. While d less than n, if n percentage d equal 0, डिवाइड हो गया. और काम करने की जरूरत है क्या? हो गया ना डिवाइड. सो यू नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो वी कैन रिटर्न फॉल्स. लाइन 21 पे अगर हम पहुंचे हैं तो इस d से डिवाइड नहीं हुआ, बिकॉज इस d से अगर डिवाइड हुआ होता तो हमने रिटर्न कर दिया होता. रिटर्न करने पे क्या होता है? पहले मैंने बोला था मेन खत्म हो जाता है. अब क्या होता है रिटर्न करने पे? वो जो भी फंक्शन है वो खत्म हो जाता है. सो व्हेन यू आर सेइंग रिटर्न फॉल्स, एज सुन एज यू से रिटर्न फॉल्स, द फंक्शन विल गेट ओवर. सो अगर मैं 14 को चेक कर रहा हूं कि वो प्राइम है या नहीं, d इज इक्वल टू 14 परसेंटेज 2 is 0. So we will come inside the if and we will return. That's it. Return. Function खत्म हो जाएगा तुरंत. ठीक है? So if you are reaching line 21, that means that d didn't divide n. So what I can do is I can do d plus plus. अगले d पे चलते हैं. And in case I can survive the whole loop
पूरा का पूरा वाइल सर्वाइव करके मैं नीचे आ गया। देखो अगर किसी से भी डिवाइड हुआ होता तो वो इफ़ के अंदर जाता, रिटर्न कर देता, नीचे पहुंचता ही नहीं। सो अगर नीचे पहुंचा है दैट मीन्स किसी से डिवाइड नहीं हुआ, एंड यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। वी कैन रिटर्न ट्रू बिकॉज किसी से डिवाइड नहीं हुआ ना। अगर किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब नंबर हमारा प्राइम है, एंड वी कैन रिटर्न ट्रू। ओके, ग्रेट। नंबर को इसको कॉल कैसे करूंगा मैं? सो अगर मुझे इस प्राइम को कॉल करना है तो इसको एक नंबर चाहिए जो चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। 13 चेक कर लेते हैं। ये मुझे क्या ला के देगा? क्या ला के देगा ये मुझे? एक आउटपुट ला के देगा। क्या आउटपुट ला के देगा? प्राइम है या नहीं है, बूलियन ला के देगा। सो आई कैन स्टोर दैट इनसाइड अ बूलियन। आंसर प्राइम, ठीक है, ये मुझे मेरा आंसर ला के दे देगा, एंड मैं प्रिंट कर सकता हूँ आंसर प्राइम को। रन करते हैं, एन देते हैं 10, आर देते हैं 4, 10c4 is 210, and it is saying hey 13 is actually a prime number. Great. एक छोटी चीज और देखते हैं बस। So I want to write a program which prints number from 1 to n. 1 से लेके n तक numbers print करना चाहते हैं। Okay, we want to print numbers from 1 to n. So how will we do that? Public static तो लिखना ही है। नंबर्स 1 से n तक प्रिंट कर देने हैं, कुछ रिटर्न तो नहीं करना। मैं उस फंक्शन को अगर बोलूं 10 तो वो बस उठा के 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सो व्हेन अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, हम उसका आउटपुट का टाइप वॉइड लिख देते हैं। वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये फंक्शन कैलकुलेशन करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। प्रिंट, लेट्स कॉल इट प्रिंट टिल n, एक नंबर दे देते हैं। सो आई एम गेटिंग ए नंबर n, आई नीड टू कैलकुलेट नंबर्स, आई नीड टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, दैट्स इट। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। एक फॉर लूप लगाते हैं, 1 से शुरू करते हैं, n तक जाएंगे और प्रिंट करते रहेंगे बस, राइट। फंक्शन को रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं है। 1 से लेके n तक जाएंगे और सब नंबर्स को उठा के प्रिंट कर देंगे, ठीक है। I is equals to 1, I less than equal to n, I plus plus. And this will work. That's it. कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? Because we already know कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। void है फंक्शन, कुछ रिटर्न ही नहीं करता, उसको कुछ करना ही नहीं है। So अच्छा चलो, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक चीज़ देख लेते हैं बस। मान लो मैंने तुम्हें नेगेटिव नंबर दे दिया, मैंने तुम्हें दिया -5, तो क्या होगा? हम 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 5 से छोटा, 1 -5 से छोटा नहीं है। सो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, राइट, बिल्कुल सही है। जस्ट इन केस, जस्ट टू सी, मेरे को अगर इसको अलग से हैंडल करना है तो व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इफ n लेस देन इक्वल टू 0, मान लो मुझे कुछ नहीं करना, अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो मैं आता हूँ नीचे जाए ना, you can simply write return here. So if a function is supposed to return something, you are supposed to write return, and what do you want to return? So here I wanted to return false. So I was return करने से क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही थी, एक तो मुझे आउटपुट मिल रहा था और एक मैं कह रहा था कि फंक्शन खत्म कर दो, बंद कर दो। अगर मेरा फंक्शन void है तो I can just say return. जस्ट सेइंग रिटर्न मीन्स कुछ रिटर्न तो करना नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा फंक्शन तो void है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन खत्म हो जाए, वापस चला जाए। ओके, ग्रेट, थैंक यू।